Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, wherein we'll be doing 15 MCQs in a session, and as part of which today we are going to see collective bargaining, which is one of the most important topic in industrial relations. See, when we talk about this series, we have launched this series so that you can have good number of practice questions as well as revision, because all the content that we are covering in this series will be in the form of MCQs. Okay, MCQs इसके बाद explanation, उससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा एंड प्रैक्टिस MCQs भी हो जाएंगे. एंड वाई लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स व्हेन इट कम्स टू UPSC EPFO एग्जाम, बीट APFC पोस्ट के लिए हो या फिर AO और या EO के लिए हो, because close to 15 plus MCQs are asked from this topic out of 120, so you can understand the kind of weightage that it has and the kind of scoring potential, because even आप basics भी सही से practice करोगे तो definitely 10 plus questions आप आराम से कर पाओगे. So hope you really use this series for taking your preparation to the next level, and I suggest you to watch these sessions carefully or regularly so that आपका एक practice हो जाए. And moreover, we are expecting the notification of UPSC EPFO 2025 very soon. So with this introduction, let me start today's session. So here comes the first question. Who is credited with using the term collective bargaining? And ये पहली बार यूज किया था 1891 में. Now collective bargaining मतलब collective, a group of people. Bargaining मतलब in this case, in this industrial relations, ये एक negotiation है between groups so that they can arrive at a mutual agreement. So overall अगर देखा जाए तो you can say that collective bargaining is an initial step in addressing as well as resolving various issues between the labor, that is the employees, and the employers, that is the management, so that एक industrial harmony को अपहेल्ड करे, मतलब एक सबसे पहले वो रखे. सो फॉर दैट दिस कलेक्टिव बार्गेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अ वॉलेंट्री एंड फॉर्मल प्रोसेस wherein both these parties engage in various negotiations pertaining to working conditions, terms and conditions of the employment, and thereby reach at a mutual agreement, so that जो भी इंडस्ट्रियल हार्मोनी है उसको बिल्कुल टॉप नॉच पे रखे. सो हियर व्हेन इट कम्स टू दिस इतना भारी वर्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग, राइट, सो इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था बेट्रिस वेब ने. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज बेस्ड ऑन द key or chief characteristic features of collective bargaining. So which of the following statements correctly describe the key characteristics of collective bargaining? So let's have a quick look at the statements. So सबसे पहले statement बोल रहा है collective bargaining is a sequential process that begins with a list of demands followed by negotiations and ends with contract administration. and ये बहुत ट्रू है, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है सबसे पहले प्रॉब्लम, उसके बाद उसका लिस्ट ऑफ डिमांड्स जो भी आता है दैट दे विल पुट फॉरवर्ड फॉर दैट टू द मैनेजमेंट, फिर उसके बाद नेगोशिएशन होगा, नेगोशिएशन के बाद जो भी फाइनल कंक्लूजन होगा जो दोनों के लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट पे होगा, दैट विल बी कमिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. सो ये ट्रू स्टेटमेंट है. It is a tripartite process involving workers, employees and the government. Collective bargaining. दो अगर जरूरत पड़ी तो definitely government भी आएगा, that is appropriate government in this case. But otherwise when we talk about collective bargaining, इसमें सिर्फ दो ही लोग और दो ही parties involved होंगे, that is the employers and the employees, that is workers and the management. and ये बहुत ही strictly बाईपार्टाइट प्रोसेस है, ये दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होंगे मेजरली. सो हियर दिस इज नॉट ट्रू, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. The primary objective of collective bargaining is to resolve the labor management issues through dialogue rather than strikes or coercive methods. Yes, this is very much true. That's why हमने पहले ही बोला था जो इंडस्ट्रियल हार्मोनी है वो सबसे ऊपर रहता है इसमें. So yes, this is very much true.
It is a collective activity where both workers and employers together they come act together in the negotiation process. And yes, this is also very much true. Obviously ये बिल्कुल opposite है second से. So वो हमने false बोला है, तो this is true. Cooperation and mutual understanding between labor and management are essential for success of collective bargaining. Obviously दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक ने बिल्कुल सारे डिमांड्स एक्सेप्ट किया या फिर एक ने बिल्कुल दूसरे के डिमांड्स एक्सेप्ट किया. इट्स नॉट लाइक दैट. दे हैव टू कम फॉर ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. सो फॉर विच दैट कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मच एसेंशियल for this collective bargaining process to be a success. So ये भी very much true है. So here 1, 3, 4 and 5 are true. So here A is the correct answer. Okay. Moving on to our next question. Which of the following best defines productivity bargaining in the context of collective bargaining? See, when we talk about collective bargaining, इसका बहुत importance है not only in the lives or in the lives of the employees but employers as well. And when we talk about this productivity bargaining, it is a negotiation process where workers agree to enhance efficiency and productivity in exchange for better wages or working conditions. So ये बिल्कुल win-win situation है both employees and employers के लिए. And now that is what is called as productivity bargaining. They are improving the productivity by bargaining collectively, thereby arriving at a harmonious situation. So here A is the correct answer. बाकी statements भी एक बार देख लेते हैं. A bargaining approach where employees unilaterally decide productivity targets. No, ये नहीं है, false है. A conflict resolution method where disputes between the workers and management are settled through third party intervention. ये भी नहीं है. A negotiation strategy that focuses solely on reducing labor cost without considering. No, ये भी नहीं है. Okay, so relatively C थोड़ा सा हो सकता है कभी जरूरत पड़ी तो. Otherwise no, collective bargaining is a bipartite process. So सबसे अगर देखा जाए तो A would be best suitable for this question. So A is the correct answer here. Moving on to our next question. What is one of the primary outcomes of collective bargaining for workers? Workers के लिए क्या इसका outcome है? Increased conflict between employers and workers? No, actually ये कम हो जाता है क्योंकि mutual understanding and cooperation के through they are arriving at a solution, right? So ये false है. ग्रेटर मैनेजरियल कंट्रोल नहीं, एक्चुअली ये इक्वल स्टेटस दिलाता है. ओके, दैट एस्टैब्लिशेस अ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर्स. सो दिस इज फॉल्स. रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड यूनियंस इन नेगोशिएशंस. एक्चुअली ये यहाँ पे ज्यादा इनका वो रहता है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट कोऑपरेशन एंड ऑल दैट, फॉर विच ट्रेड यूनियंस का बहुत हेल्प रहता है इसमें. सो ये भी फॉल्स है. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड workers ensuring equal status. बिल्कुल opposite है ना first से. So this second is से. So this is the right reason or the outcome of collective bargaining, especially for workers. So here D is the correct answer. Moving on to our next question. What is notable about the agreement between TISCO and Tata Workers Union in 1956? Now TISCO, that is Tata Iron and Steel Company Limited, and Tata Workers, they are of the same group, Tata Group. And when we talk about collective bargaining, they occur at various levels, like unit or plant level, और लाइक इंडस्ट्री लेवल, नेशनल लेवल, उस तरह से अलग अलग लेवल्स में ये होता है द नेगोशिएशंस, द कलेक्टिव बार्गेनिंग, रिलेटेड टू कलेक्टिव बार्गेनिंग. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्रीमेंट दैट हैज अकर्ड बिटवीन द टिस्को एंड टाटा वर्कर्स, ये एक यूनिट या प्लांट लेवल के नेगोशिएशन का रिजल्ट है, विच रिजल्टेड इन डिसेंट्रलाइज्ड एग्रीमेंट्स, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज द पायोनियर, or you can say the first of its unit level agreement in India. जो collective bargaining हुआ है, that has happened here. So here different federations or same what you will say group है, but different units or plants. So they have
they have involved their respective federations at the company level or the plant level, involving representatives of unions, and they discussed on on the issues that have cropped up at that time, and they have come to an agreement. And this, it has paved a way for the unit level agreements in India. And this, the importance of this is it was a first unit level agreement that has occurred in India when it comes to the collective bargaining under industrial relations. So यहाँ पे C is the correct answer. Moving on to our next question. Which of the following best describes the key characteristics of economy level bargaining? Now, when we talk about economy level bargaining, you can say that ये national level bargaining का ही एक extension है. Okay, and यहाँ पे the main objective is to fulfill the macroeconomic goals of the entire nation as such. So यहाँ पे जो भी collective bargaining होगा in whatever levels, that is individual workplaces to the national economy, वो that will try to fulfill the objective, okay, of whatever the negotiations that are being done, but focusing on the macroeconomic goals or the economic principles. So here when we talk about it, it is always a bipartite. No, when we talk about this economy level bargaining, सबसे ऊपर पड़ता है ये, and it can be bipartite or tripartite, involving the union confederations, employer associations, and government agencies as well, to achieve macroeconomic goals. Yes, this is very much true. It focuses exclusively on resolving workplace disputes without considering. No, it has to take into consideration economic policies based on which the negotiation and the final outcome would be based. So this is false. It only applies to small enterprise, does not impact. No, ये सभी के लिए होगा. And yes, it has a impact on the national economic policies, hence ये economy level bargaining में आता है. So here when we talk about this, B is the correct answer in this case. So coming to the next question, here we are looking at the pre-bargaining stage. See, when we talk about the collective bargaining, there are वेरियस स्टेजेस, मेजरली 3 स्टेजेस. एक तो प्री बार्गेनिंग हो गया, एक तो बार्गेनिंग स्टेज हो गया, जो जिसमें एक्चुअल नेगोशिएशंस होते हैं. प्री बार्गेनिंग क्या है? बोथ द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स दे आर गेटिंग रेडी फॉर द कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसीजर्स. सो लास्ट में आता है अपना कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो फाइनल आउटकम जो है. सो हियर इन द प्री बार्गेनिंग स्टेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स अंडरटेक सिग्निफिकेंट प्रिपरेशंस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब दीज प्रिपरेशंस? सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट केयरफुली स्टडीज द charter of demands and defines objectives such as improving productivity, production levels and worker relations etc. Yes, this is very much true, क्योंकि जब वो देखेंगे तो सबसे पहले उनका होगा कि if we fulfill these demands, उसका impact किस तरह से होगा, अगर नहीं करेंगे तो उसका impact किस तरह से होगा, या फिर बीच में कुछ है where we'll have a win-win situation. So उस एंगल में वो सोचते हैं. So based on that they prepare their arguments. Now, a negotiation team is formed, typically including HR managers, industrial relation experts, financial analysts and production heads. Yes, ये employer की तरफ से होता है, so that because overall impact क्या होगा, that they have to look into. So for that this is very much required. Workers must ensure that the charter of demands represents all categories of workers including women, skilled and unskilled labor. Yes, जब on the एम्प्लॉयज का किस तरह से है, दे हैव टू लुक इनटू जो भी कोई डिमांड कर रहे हैं, वॉट एवर दैट द डिमांड दे आर डूइंग, इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द वर्कर्स. ओके, इट्स नॉट दैट कुछ सेक्शन ऑफ द वर्कर्स के लिए इंपॉर्टेंट यूजफुल रहेगा. सो यस, ये भी ट्रू है. Co-optation is a process where management and workers collaborate ethically to enhance bargaining outcomes. Actually, co-optation refers to the situation when the management tries to influence one or more of the union members by offering them promotion or other benefits in exchange for the information about the union strategies or for influencing the workers so that they can take undue advantage during the negotiation processes. So ये बिल्कुल अनएथिकल है एंड जनरली ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए एम्प्लॉयर्स को. But sometimes this also gets into
as they get murkier the politics, यहाँ हो भी जाता है कभी कभी, but otherwise this is completely false statement, ये होना ही नहीं चाहिए. Organizational bargaining refers to situations where negotiations occur within a worker body due to differences among the worker groups themselves. Yes, this is also very much. तो कई बार हो जाता है, difference of opinion की वजह से हो जाता है, and this is true. So here only 4 is false. So 1, 2, 3 and 5. So here 1, 2, 3 and 5. A is the correct answer. Moving on to our next question. Which of the following best describes the nature of distributive bargaining in labor management negotiation? See, when we talk about collective bargaining, there are various types of collective bargaining, of which one of the types is distributive bargaining, which is also called as conjunctive bargaining. Okay, इसी को कंजंक्टिव बार्गेनिंग भी बोलते हैं. नाउ इसमें ये ऐसा बार्गेनिंग है, इट इज अ जीरो सम गेम, विन विन नहीं, विन लूज सिचुएशन है यहाँ पे. सो वेयर वन पार्टीज गेन कम्स एट द डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द अदर, ऑफन लीडिंग टू स्ट्रेन्ड लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस. सो ये कई बार ऐसा होता है कि वहां पे कोई और ऑप्शन नहीं है अदर देन एक्सेप्टिंग टू द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स, और वर्कर्स को कोई और ऑप्शन नहीं रहता है कि मैनेजमेंट जो बोले वही करना है. ओके, सो दिस एक्चुअली समटाइम्स कैन ब्रीड मिसट्रस्ट एंड अनहेल्दी labor management relationships, manager relations as well. So but however उस तरह के जो bargaining होता है कभी कभी वैसे भी हो जाता है. So that kind of bargaining is called as distributive bargaining or conjunctive bargaining. So in this case it is B is the correct answer for distributive bargaining. Moving on to our next question. Which of the following best describes the integrative bargaining in labor management negotiations? इसको cooperative bargaining, okay, और interest based bargaining भी बोलते हैं. Okay, now ये है actually एक विन विन सिचुएशन टाइप का, rather than either one party losing out or only one party winning, और इसमें इस तरह से है दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा. ठीक है, दोनों का कुछ नुकसान नहीं होगा, अगर होगा भी तो दोनों का होगा, उस तरह से विन विन सिचुएशन फॉर ईदर. सो इट इज अ विन विन अप्रोच वेयर बोथ लेबर एंड मैनेजमेंट कोलैबोरेट टू फाइंड म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशंस सच एज इंक्रीज्ड जॉब सिक्योरिटी इन एक्सचेंज फॉर हायर प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा. ये एक एग्जांपल भी इसमें दे दिया है, यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है. सी फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज बोलते हैं कि ओके we want job security. Okay, on the other hand management बोलता है okay काम करते हैं, we'll increase the working hours, okay, at the same cost, जो भी same wages है उसी पे करेंगे, but yes we will have job security. So win win situation, इनके लिए job security का वो हो गया और कंपनी को थोड़ा सा productivity, increased productivity मिल जाएगा at the same cost. So win win situation. So such kind of negotiations or bargaining, it's called as integrative bargaining or cooperative bargaining or interest based bargaining. So here C is the correct answer. See, there is a term attitudinal structuring that comes actually in collective bargaining. So what does that actually attitudinal structuring collective bargaining primarily aims at what? See, कई बार while negotiations कई बार ऐसा होता है कि create एक bitterness type का आता है because of the attitude. So attitudinal structuring is nothing but changing that kind of attitude and beliefs of both the workers and the management which they have already harbored, एक perception type का है that, and trying to create an environment of mutual trust. ओके, सो उस जो एटीट्यूड को चेंज कर रहे हैं, वी आर स्ट्रक्चरिंग दैट इज कॉल्ड एज एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग. जनरली ये दो सिचुएशंस में अप्लाई करना पड़ता है. एक तो पहला सिचुएशन है लूज लूज सिचुएशन. नाउ वेयर हियर दिस इज अ केस वेयर नन ऑफ द पार्टीज आर रेडी टू अकोमोडेट द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पार्टी. ओके, एंड इन सच सिचुएशंस क्या होगा, नेगोशिएशन बिल्कुल डेड एंड पे आएगा एंड दोनों को कुछ फायदा नहीं होगा, दोनों का ही लॉस ही है. सो एक सिचुएशन है. दूसरा है व्हेन देयर इज विन लूज सिचुएशन.
ओके, इसमें क्या है, एक पार्टी लूज हो रहा है, एक पार्टी बेनिफिट हो रहा है, इसकी वजह से एक बिटरनेस टाइप का भी आने के चांसेस है उसमें. सो इन सच केसेस वन कैन इन्वॉल्व दिस एटीट्यूडिनल स्ट्रक्चरिंग wherein this focuses only on economic factors. It changes the attitudes and beliefs of both the parties to foster mutual trust and cooperation, especially in situations of conflict or a deadlock. So उस तरह के negotiations जब होंगे, that leads to change in the attitude, thereby जो lose lose या win lose वाला है, that also can be changed to a win-win situation by applying this attitudinal structuring in collective bargaining. So this here in this case, D is the correct answer. So coming to the next principle of collective bargaining, which of the following best defines the principle of good faith bargaining? So in this, it requires both the parties to negotiate with the intent to reach an agreement, making honest attempts to resolve disputes while not being forced to accept any proposal or make undue concession. So बिल्कुल एक गुड फेथ में जैसे होता है, सो दोनों का बिल्कुल रेडीनेस होना चाहिए, बिल्कुल ओपन माइंड के साथ कि नेगोशिएशंस करें एंड एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे वो लोग आए. ओके, तो इसके लिए they should not compel the other party to bend down, all this happens only when they have that intent to reach an agreement positively. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि this principle of good faith is violated. कब होता है ये? when one of the sides indulges in a surface bargaining, like I wash type का, मतलब अब हो रहा है and लेकिन बाद में, अभी के लिए हम लोग कर रहे हैं, बाद में वो implement ही नहीं करे. ओके, कुछ डिसीजन लिया है म्यूचुअल एग्रीमेंट पे, बट द डिसीजन दे वोंट बी इम्प्लीमेंटिंग दैट प्रॉपरली. सो उस तरह से है. और ईदर ऑफ द पार्टीज इन दे इंडल्ज इन द अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द नेगोशिएशन प्रोसेस, कि वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन लिया है, कोऑप्टेशन टाइप का कुछ कर दिया है एंड ऑल दैट. एंड तीसरा, एम्प्लॉयर ही रिफ्यूजेस, दे रिफ्यूज टू मीट द यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स एट ऑल, कोई डिस्कशन का स्कोप ही नहीं छोड़ रहे हैं वहां पे. ओके, वो या फिर एम्प्लॉयर बिल्कुल रिफ्यूज कर रहा है कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूनियन को, सो that information can be used for holding the discussions and negotiations. So इस तरह से कुछ भी होगा तो then they are violating the principle of good faith actually. But otherwise good faith में क्या है ना, as we have a good intent के साथ कोई भी problem हो उसको negotiate करना है and coming with a proper solution. So here A is the correct answer. So moving on to our next question. Contract administration is the collective bargaining process is crucial because, जैसे मैंने बताया है, when we talk about the steps of collective bargaining, सबसे पहले आता है प्री बार्गेनिंग, बार्गेनिंग इटसेल्फ जहां पे नेगोशिएशंस बिल्कुल हो जाते हैं, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? सी, वंस एन एग्रीमेंट इज साइंड बिटवीन द ट्रेड यूनियन एंड द मैनेजमेंट, जो भी नेगोशिएशन होने के बाद, विच एक्चुअली इज कंसिडर्ड एज द final phase in the process of collective bargaining, and that is marked by this contract administration. That is, the parties they both जो भी साइन किया है उसको किस तरह से implement करना है, the entire process, everything falls under this actually. So here this contract administration ensures that the negotiated agreement is implemented effectively, grievances are addressed systematically, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार में अच्छे से implement हो जाए, कई बार grievances भी होते हैं, उसका भी इनके पास वो आंसर होना चाहिए कि किस तरह से वो एड्रेस करने वाले हैं. ओके, एंड इंडस्ट्रियल हार्मोनी इज मेंटेन्ड थ्रू स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स. सो हियर कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब कुछ ही होता है, मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला जो मेन प्रोसेस जितना इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहां पे अगर कुछ डिसीजन हुआ है एंड दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, सही तरह से इम्प्लीमेंट करना है विदाउट एनी ग्रीवेंसेस एंड ऑल दैट, तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है उसमें. सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. सो एक बार दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं. टेलोस मैनेजमेंट टू री इंटरप्रेट कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग बिजनेस कंडीशंस. नो, ये ऐसा नहीं होता, जो उन्होंने डिसाइड किया दैट ओनली will be final. अगर कुछ चेंज करना है तो अगेन दे हैव टू कम टू डिस्कशन एंड ऑल दैट.
It primarily serves as a formality as most agreements remain self-executing. No, ऐसा कुछ नहीं है. They have to follow a proper protocol. सही तरह से करना पड़ेगा. तो ये false है. It gives a trade union unilateral authority to enforce the agreement even if certain conditions are impractical for. No, ऐसा कुछ नहीं है because they are coming to this जो भी decision होगा mutual agreement पे ही होगा. So obviously, so here B is the correct answer. So moving on to our next question, how does a strong legal and political framework contribute to the effectiveness of collective bargaining? So when we talk about this, जब भी कोई strong legal and political framework होगा, definitely that would help in contributing to the effectiveness of collective bargaining by establishing a structured approach to dispute resolution, ensuring that workers can negotiate through mechanisms like tripartite conferences, joint management councils, and grievance redressal, while also promoting mutual cooperation as emphasized in the Industrial Truce Resolution of 1962. This is very much true. ओके उसी तरह से करेंगे क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट द अगर स्ट्रॉन्ग लीगल एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है तो एक थर्ड पार्टी का भी इसमें आने के चांसेस हैं. दे हैव क्लियरली गिवन ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्रेंसेस क्योंकि वहां से भी कुछ इनपुट्स मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि डिसीजन प्रोसेस में उनका एक से रहेगा बट यस दे विल हैव इंडस्ट्री का या उस क्योंकि वो उनका जो ओवरव्यू है वो बहुत ही ब्रॉड रहता है. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ एक्सटर्नल एम्प्लॉय इंटरनल एम्प्लॉय एंड ऑल दैट इन दैट वी हैव सीन. सो उनका एक व्यू बहुत एक 360 डिग्री व्यू यू कैन से इवन मोर देन दैट उस तरह से रहता है दैट दे कैन यूज हियर. सो डेफिनेटली दैट वुड हेल्प इन this resolution of the conflict, at the same time promoting mutual cooperation as emphasized in the इंडस्ट्रियल ट्रूथ रेजोल्यूशन क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब कुछ मेंशन्ड है कि इस तरह से करना है. सो दे कांट एक अलग तरीके से या फिर गलत तरीके से वो नहीं कर सकते. सो हियर ए इज द करेक्ट आंसर. दूसरे भी ऑप्शंस देख लेते हैं. बाय अलाउइंग एम्प्लॉयज टू डिक्टेट द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यूनिलैटरल, ऐसा कुछ नहीं. ऑलवेज इट वुड बी बायलैटरली नॉट यूनिलैटरली. सो फॉल्स. बाय मेकिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑप्शनल एंड अलाउइंग कंपनीज टू डिसाइड वेदर, नो कलेक्टिव बार्गेनिंग कंपल्सरी ऑप्शनल नहीं है. By enforcing rigid, no ये भी नहीं है. rigid labor laws तो क्या होता है फिर, that won't get that satisfied result in that. Okay, so here A is the correct answer. Why is an attitudinal framework crucial for successful collective bargaining? ओके सो यहाँ पे एक सपोर्टिव एटीट्यूड होना चाहिए फॉर नेगोशिएशंस फ्रॉम बोथ द केसेस, एम्प्लॉयर्स से भी एंड ट्रेड यूनियन से भी. ओनली देन दे विल बी एबल टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द कलेक्टिव बार्गेनिंग, राइट. सो बिकॉज अ रिजिड एंड हायरार्किकल मैनेजमेंट स्टाइल स्ट्रेंथेन्स द एम्प्लॉयर्स पोजीशन इन नेगोशिएशन, ensuring that workers comply with decision rather than challenging them. No, collective bargaining में दोनों का से रहता है. So this is false. Because negotiation should be adversarial in by nature, with each side focusing only on maximizing its own gains. No, they have to have win-win. दोनों का गेन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपना अपना देखा है. So this is also false. Because mutual trust, respect and workers' rights and a participative management style create an environment where negotiations are more constructive, increasing the chances of long-term industrial harmony and successful agreement implementation. So every step they have considered here. That's the reason attitudinal framework का बहुत crucial है क्योंकि दोनों का attitude उस तरह से होना चाहिए कि that they have to come out with a positive outcome. So this is very much true. Because trade unions must maintain a confrontational stance to secure the best possible terms for workers and flexibility in negotiations is a sign of weakness. ऐसा कुछ नहीं है. That actually is a sign of mutual understanding and to have that industrial harmony, and thereby जो decisions ले रहे हैं that also have to be implemented सही से. ऐसा नहीं कि ठीक है अब उस time pressure की वजह से they have said okay for that and उन्होंने continue कर दिया work, but अगर वो implement ही सही से नहीं हो रहे, so the entire process will go waste, right. So this is false. So here C is the correct answer. So how does the absence of statutory provisions of for trade union recognition impact collective bargaining in India? अगर statutory provisions ही नहीं है, okay,
सो किस तरह से कलेक्टिव बार्गेनिंग को इम्पैक्ट करेंगे. नाउ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट आई हैव टेकन फ्रॉम द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर जो 2002 में लॉन्च एस्टेब्लिश हुआ था. सो व्हाट दे हैड टू से वाज एक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होना चाहिए फॉर ट्रेड यूनियंस. व्हाई? बिकॉज अगर वो नहीं होंगे देन इट वुड वीकन द बार्गेनिंग पावर ऑफ द वर्कर्स एज एम्प्लॉयर्स कैन सेलेक्टिवली recognize unions that align with their interest, undermining the legitimacy of genuine worker representation and disrupting the collective bargaining process entirely. So ये compulsory है कि एक statutory provision होना चाहिए right to organize and collective bargaining या comprehensive industrial relations law etc. So that जो collective bargaining है that has to be held upright. So यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते. It strengthens industrial democracy by allowing multiple unions to negotiate independently. ऐसा कुछ नहीं है. They have to negotiate with the employers itself and that too multiple नहीं. Again they have to sit amicably, discuss amicably and come out with जो भी discussing parties है accordingly they have to discuss. It has no significant impact. No it has, because अगर नहीं है तो collective bargaining तो हो ही नहीं सकता. सब कुछ one way होगा. So ये false है. It ensures a balanced negotiation process as employees have the discretion to choose trade unions that best represent their business interests. तो उनके हाथ में रह जाएगा which is not at all good for overall employees. सभी के लिए. कुछ लोग benefit हो सकते हैं employees में या फिर workers में but everyone can't. So ये भी false है. So here B is the correct answer. So अगर absence हुआ है of any statutory provisions then that will lead to various problems. So how do the recommendations of the second National Commission on Labour 2002 aim to strengthen the collective bargaining in India? कई सारे उन्होंने बताया है and उसमें कुछ recommendations है to advocate for a comprehensive industrial relations law, strengthening the right to organize, ensure trade unions legitimate role in negotiations, that is collective bargaining themselves, and enabling the bonus determination through collective bargaining to make the process more structured and effective. So और भी इसको एक legitimate या फिर एक सही से structure देने के लिए they have said that they have to come up with an comprehensive industrial relations law जिसमें ये collective bargaining का एक बहुत ही ऊपर होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए, because वहाँ directly management and the workers they can negotiate and come out with the best decisions, thereby impacting the both in a most positive manner and at the same time industrial harmony को भी वो maintain करे.